Good morning, class 10th. Yesterday we have started lesson number 4, Globalization from the Economic Development. In that chapter we have gone through the introduction part as well as the meaning of multinational company with an example. Today I will be starting my topic that how the production work is carried in the multinational companies. Now, when we were doing an example for the multinational companies yesterday, we were going through that the industrial equipment producing company was based in UK. It get designs from designing work from USA, components from China, assembling in Mexico and the parts of Eastern Europe. Call centers, English-speaking customer care offices were set up in India. So what they are doing is that they made centers of Mexico and Eastern Europe just to export their material. अपना सामान बेचने के लिए उन्होंने ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा और मेक्सिको का हिस्सा चुना था. From here, one thing we get clear is that multinational company sell goods globally. They don't sell them in just one country. They sell their goods in the different countries of the world, as they also produce goods globally. And the production work is also carried through all over the world. In such a manner, if a question comes that how multinational companies produce goods, so we have just an answer that the production process is very complex as far as the MNCs are concerned. It is basically divided into smaller parts, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, and it is spread across the globe. Moreover, question comes that why multinational companies set up or produce goods globally or sell globally. Here there are certain factors which influence the multinational companies. Number one factor is multinational companies look that where they can get a cheap manufacturing location. Here cheap manufacturing location में basic needs जो होती हैं उनके बारे में देखा जाता है. Number one, whether the land is available, whether the raw material is available, whether the infrastructure can be done, whether the electricity, the means of other things are available or not available, and then they decide to set up their manufacturing unit. It's not like that they were looking for setting up a customer care center in India. Here they can get a cheap labor, so it influences them. And when the cost cutting factors comes, they set up their unit in that area where they can get all things at the cheaper prices. Similarly, whenever the multinational company sets up, it looks into whether the goods produced is close to the market or not. इधर क्लोजनेस टू द मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हम एक घर में रहते हैं चलो मार्केट आते हैं पैदल. इधर मतलब ये है कि इफ अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ कोल्ड ड्रिंक, वेदर इट कैन बी सोल्ड और नॉट. कैन यू इमेजिन कि जो यूरोप की कंट्रीज हैं विच आर बेसिकली 6 months बीइंग कवर्ड विद स्नो, और द सदर्न हेमिस्फीयर में जो कुछ कंट्रीज लोकेटेड हैं, देयर इज अ डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक इन दैट कंट्रीज? ऑब्वियसली नो. बट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यहाँ जूसेस की, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड ज्यादा है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर अपने प्रोडक्शन हाउसेस को लगाना समझ में करती हैं, फ्रॉम वेयर दी कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इजीली. मोर ओवर, एंड द थर्ड फैक्टर मल्टीनेशनल कंपनीज को जो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द लेबर. लेबर के रिगार्डिंग दो चीजें मानी जाती हैं. नंबर वन, इट शुड बी स्किल्ड. आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा चीप. चीप तो है ही है, ऑब्वियसली जितने पॉपुलेटेड कंट्रीज होंगे वहां पर लेबर इजीली अवेलेबल होगी, और एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज इजी टर्म्स पे अवेलेबल होगी. लेकिन इट शुड बी इवेंचुअली स्किल्ड. समवेयर इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड. मोर ओवर, दे ऑल्सो डिमांड दैट कि ग्लोबल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, सो दे मस्ट बी इंग्लिश स्पीकर्स. All these factors, number one, the chief manufacturing location देखी जाती है, closeness to the market देखी जाती है, labor देखी जाती है. All this process is done basically to reduce the 50 to 60% cost.
फाइन. नाउ वंस दिस प्रोडक्ट प्रोसेस इज डन, तो हमारे लिए दूसरा आ जाता है, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो फाइन. तो हमारे लिए आता है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ टॉय और अ क्लोथ और अ जीन्स और अ कार्ड जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट इंडिकेट्स दैट इट हैज बीन मेड इन चाइना. So it's not obvious that designing has been done in China. It doesn't matter that cost has been decided by the China. It doesn't mean that the Chinese made product can only be sold in China. That market doesn't represent. What is the labor factor? And so on, many factors influences it. एक चीज और है जो बाकी के फैक्टर्स में हमारे लिए आती है, जिसे हम कहते हैं फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज. इन दो को मैंने डिस्कस कर लिया है. अब हमारे लिए फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज. जब हम फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं व्हाट आर द बैरियर्स और द रिस्ट्रिक्शंस बीइंग इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. क्या गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्सेस लगा रही है जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा हो रहा है या नहीं. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं क्या एक पर्टिकुलर देश में बैंकिंग, नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्ट ही नहीं, रेलवेज है, सामान तो इधर से उधर ले जाया ही जाता है, एयरवेज है या शिप है, थ्रू सी है, वेदर इट इज हैविंग अ पोर्ट फैसिलिटी और नॉट. इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है वो हाईली एडवांस्ड है या नहीं, डिजिटलाइज है या नहीं. इसके अलावा सर्विस सेंटर्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्फ्लुएंस करते हैं. For right now I am ending this chapter. In next topic I will be telling you how these multinational companies function and how they bring these factors under one roof.